कुछ चीजें जो अनकही रह जाती या कुछ चीजें जो अनसुनी रह जाती, आई थिंक वो मौका हम लोगों को मिल रहा है, मुझे मिल रहा है। शी इज द मोस्ट अनएक्सपेक्टेड एंड मतलब अंडर यूटिलाइज्ड singer as far as this classical zone is concerned, and I always tell her that you are my soul voice. There's a big battle within the industry also, and musicians, हर एक म्यूजिशियन अपने राइट्स छोड़ रहा है ताकि वो मुझे या हमारे कंटेम्परेरी जो अभी काम कर रहे हैं उन्हें रिप्लेस कर सके. This is a dog eat dog industry because the artists are not united and the labels getting to play the game. तेरी याद बहुत अब आने लगी है, एक जान है अब वो जाने लगी है. Dabboo, you have composed a song, right? Yes. It is beautiful, Dabboo. It's like a ghazal format. Yes. And I have given that lounge feel to it. It's not got the traditional tabla dholak or I've not treated it like that. So I've treated it like वो जो tradition है, tradition को जिंदा रखा है, but at the same time, Sunidhi, she has a beautiful voice when it comes to softer numbers. Usually उनको तड़कते भड़कते गाने ज़्यादा उनको दिए जाते हैं. But she sounds outstanding. क्या मतलब ये एक challenge था. And it was like we have always been like this. Like Kuch Khab was our last song last year. Exactly a year back, we had done it for MWM. And Firak was almost after 3 months or 4 months, we had already recorded. And we were supposed to do its release in about November or December. But then it got little delayed. जब मैं पहली बार ये गाना मैंने सुनिधि को सुनाया था कि दिस इज व्हाट आई वांट टू डू विद यू, तो हर रिएक्शन वाज सो ग्रेसफुल. शी सेड आर यू श्योर? मैं लाइक यस आई एम वेरी वेरी श्योर. सो जब हमने उसको पहले रिकॉर्ड किया एंड द सेशन वेंट ओवर, मतलब वी फिनिश्ड द रिकॉर्डिंग एंड वी केम बैक एंड आई हर्ड द सॉन्ग. सडनली वी फेल्ट दैट जो इसकी बांट है वो हम लोग अलग तरह से हमने प्रोग्राम किया था, अलग तरह से इसका क्यू ट्रैक अरमान ने गाया था. एंड व्हाट वी इवेंचुअली डिड इन द स्टूडियो वाज नॉट एग्जैक्टली व्हाट वी हैड थॉट ऑफ. 2 दिन 4-5 दिन की और थोड़ी सी थॉट प्रोसेस गई. एंड देन वी Sunidhi was very graceful and she said okay, so now I understand the other element of it, and we went back to do the version that we really felt, everybody felt that was something good. और बहुत टाइम से ये मेरी वॉइस नोट में था एंड बहुत समय तक, जैसे ये मुखड़ा जो है, मैं तेरे फिराक में फिर रहा हूँ दर बदर, मैंने एक मेल वॉइस के लिए लिखा था. एंड तो एक्सपेक्टेड था कि हमारे एमडब्ल्यू में या तो अरमान गाएगा या अमल गाएगा या मैं गाऊंगा. सो आई सेड लेट्स ब्रिंग अ चेंज एंड लेट्स हैव अ फीमेल इंटरप्रिटेशन. एंड दैट्स वेयर I got Panchi Jalonvi on board and I said कि अब ये lady की point of view से let us bring it on if it's a female interpretation. तो सारे अंतरे change हुए and rest as you hear it, I think it has really touched everybody's heart in a very different way. I think it's lovely और क्लासिकल nuances हैं. जिस तरीके से जो I think जो हरकतें जो करी हैं Sunidhi ने, which I think she has all the she is the most unexpected and मतलब underutilized singer as far as this classical zone is concerned. And I always tell her that you are my soul voice. Whenever I interpret a song, like Amaal is completely gungo about Shreya Ghoshal. He cannot think of a melody. Whenever he thinks of a melody, he thinks of Shreya Ghoshal. एंड सरप्राइजिंगली बहुत साल पहले एक गाना मैंने किया था, तेरी याद बहुत अब आने लगी है, एक जान है अब वो जाने लगी है, तन्हा तन्हा हम रहने लगे हैं,
तन्हाई बड़ा तड़ पाने लगी है. The film never got released, but this song also Sunidhi had sung. इसके इतने versions बने हैं इंटरनेट पे, then it stayed in my heart कि कभी मुझे मौका मिला और कभी मुझे कोई ऐसा गाना करना है जो बिल्कुल ही क्लासिकल जोन के अंदर embedded होगा, मैं definitely सुनिधि के साथ करूँगा. And Firak is an output of that passion. No, but I think Dabboo, this song has a lot of possibilities. Song has a lot of possibilities. मैं कोई doubt ही नहीं. So coming from our family home label, I think we are giving opportunities to those songs of ours, which would have, the technology is really helping us. Time is just favoring our creative endeavors. कि भैया you can put out your music in the world, and without being really copped down by the so-called कि क्या चलता है क्या नहीं चलता है. तो कुछ चीजें जो अनकही रह जाती या कुछ चीजें जो अनसुनी रह जाती, आई थिंक वो मौका हम लोगों को मिल रहा है, मुझे मिल रहा है. एंड ऑफ कोर्स अमल एंड अरमान आर रियली सपोर्टिंग मी बिकॉज इट्स देयर डैड्स विश. सो विल ट्राई एज मच एज पॉसिबल टू गेट द बेस्ट सॉन्ग्स ऑन एमडब्ल्यू. डब्बू जी, ये गाना सुनने के बाद में से गजल सुनने के बाद में मेरा जो एक कैफियत थी वो ये थी कि आई थिंक देयर इज अ मैसिव वैक्यूम जो कि जगजीत सिंह जी के बाद रह गया है, और शायद मेरे ख्याल से उसको किसी ने प्रॉपर्ली यूटिलाइज किया ही नहीं है, उसको फिल अप किसी ने किया ही नहीं है, और ये कुछ उस जोन में जा रहा है जिसकी कि एक डिमांड है लेकिन सप्लाई नहीं है. हाँ, सो दैट इज द रीजन. जैसे आपने देखा होगा कि मेरी जो ट्रीटमेंट थी, क्योंकि अगर ये सिर्फ एक संतूर, हारमोनियम और तबला और ढोलक पे हम इसकी एक आइडेंटिटी क्रिएट करते हैं जो उसको प्योर फॉर्म कहते हैं ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक, तो मुझे लगता है कि शायद ये एक एक्सेप्टेंस मोड, क्योंकि वो जो गजल की जो पूरी क्या कहते हैं फैन फॉलोइंग है, वो एक्चुअली आज रिलेवेंट नहीं है. people love ghazals, but in terms of the whole world listening to music, everybody wanting to listen to that music, the younger people wanting to listen to those songs, all is basically now surrounded by a typical global sound, or people want to hear in their palette. So that is the reason why when I was doing the bass line, when I was doing the harmony, when I was recording and doing the production of this, I said, okay, let's give it in a form where people will react to. Generally everybody, and uski sensibility मैंने तोड़ी नहीं. Though I've not used the tabla, I've not used santoor, harmonium or so-called traditional things, but जो उसकी sound space है या जो soundscape है, अगर आप देखें तो उसके अंदर low drums हमने use किए हैं, और उसकी जो identity है उसको प्योर रखा है. हार्मनीज को हमने एक इस तरह से कल्चर किया है ताकि वो गाने की अपनी एक पहचान को डैमेज ना करे. इट इज नो डेस्परेशन टू टेक इट अवे, बट आई एम वेरी थ्रिल्ड बिकॉज frankly saying, I love the school of Pancham Da, and after that Rahman. I'm a great fan of his production, and कहीं हम लोगों को किसी न किसी लेवल पे उनके जो A.R. रहमान का जो soundscape है, उनका जो production है, I really value it. And I think Firak is somewhere down the line, though the song is completely Indian pure Indian melody, but we have tried to just blend the two. Amal, so I was told today morning that Sunidhi has not been singing too many songs for movies, Hindi films right now. She has just done Sami in Pushpa down south. Yes. And apparently she has certain issues with the royalty system, the way it functions in the Bollywood. And it seems that she's happy with the way the South industry is functioning as far as music is concerned. So what is your take on this particular aspect? I think it's very important what she's standing for. Mm-hmm. And what even Sonu ji, Shreya, a lot of our senior singers who we don't see much of nowadays, obviously some out of their own choice that they want to do only great work because they've done stellar work throughout their career. And some maybe because we do have several beautiful voices today also. So kahin na kahin tones, tonalities and soundscape badal raha hai. Aaj jo singers ke shelf lives bhi hai, if you see, are not as big as compared to these 5
like Shan, KK, Sonu Nigam, Sunidhi Chauhan, Shreya Ghoshal. They have seen a 20-year beautiful, spectacular run, and now younger kids are being able to see maybe 4 or 5 years, if they are as good as maybe an Amaal Malik or a Darshan Rawal. And if you are immortal, a singer like Arijit, then you still get to see only 10 years. Suddenly there was a time in between people would say Arijit बहुत हो गया कितना गा रहा है. These are general, not just industry talks. Public gets bored of, people not related to music get bored of certain tonalities and styles of singing. तो कहीं ना कहीं उस बात का एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी लिया जाता है बाय आवर इंडस्ट्री की शायद किसी और को आज ढूंढ के, if he just has a good tone and it's working, people are saying it's a vibe. Now, that's the new thing. And when you listen to a song by an artist called Ritviz, an independent artist, हम तोड़ गए, ऐसी आवाज जो है वो हम फिल्म्स में तब तक ला नहीं पाते थे एक टाइम तक कि लिप सिंक होता था हर गाना. आज कभी कभी लिप सिंक 80% फिल्म्स में नहीं. सो एनी क्वर्की, क्रेजी, स्पेक्टेकुलर, डिफरेंट, हटके आवाज can be tuned to the right way. I'm not saying his is tuned. It's called melodyning and tuning and making a tonality for the song. So somewhere, lot of senior singers don't want to experiment also with that, with their vocal. They feel हम tuner डाल के नहीं गाएंगे. ऐसी भी चीजें हैं. Certain songs like a Mikka singing or Subha Hone Na, they has those kind of twangs. So newer people have made such a big, I'm sorry, I'm taking a lot of time to explain this. It's an important thing. Newer people have come into the scene by the dozen, by the millions in terms of singers, and composers भी उस time से आज अगर 5 थे, 10 थे till 2010, 11, now there are 500, maybe 5,000 composers. So due to this, there is the ability to not take a song from someone like me also and take it from any rank newcomer. Today it doesn't matter where the song comes from. वो सब चीजों को लेके एक तरफ से I would say a bad practice has been happening with labels in our country, that they don't want to give anyone their rights. And I'm not speaking about any one label. This is all of them. You can only ask for it. Sadly, we have to ask for it. It should come on its own. You have to ask for it if you are on the level of an A plus, according to them, an artist. Then maybe you can ask के rights दो. अगर आप एक रैंक न्यू कमर है तो शायद अरे हम रिलीज दे रहे हैं ना आपको, ये एटीट्यूड होता है. तो कहीं ना कहीं ये सीनियर्स के साथ नहीं बैठता है. एंड आई थिंक दे आर डूइंग द राइट थिंग बाय सेइंग कि आप या तो हमें रेम्यूनरेट करो विद रिस्पेक्ट, कि आप बुला के आवाज बदले जाती है और इन्फॉर्म भी नहीं किया जाता एक सिंगर को, तो यू पे देम फॉर देयर टाइम स्पेंट इन द स्टूडियो. सो दे आर हैप्पी. And maybe sometimes some feel that it's not right, some feel it's right. There's a big battle within the industry also, and musicians, हर एक musician अपने rights छोड़ रहा है ताकि वो मुझे या हमारे contemporaries जो अभी काम कर रहे हैं उन्हें replace कर सके. This is a dog eat dog industry because the artists are not united and the labels getting to play the game. So the seniors have made their space, they made their life. So they are asking for it and they can ask for it, and the newcomers maybe can't. I am somewhere who stands in between. I understand the predicament of a younger guy who will give away his rights, but I understand what they're doing is also right. So I stand for it, and that's why if you see, मेरे भी काफी ऐसे independent जो, see, as a film song, as a composer, we have to give. That's the point I'm saying. There's a difference between independent film and independent. Yeah, completely. You have to forego your rights in terms of there are ownership and ability for the producer. I'm not saying label here. मैं अगर आज एक फिल्म करता हूँ साजिद सर की नडियाड वाला grandson, if you यानी I'm doing बच्चन पांडे, so if you do a song for them, they hold complete ownership of 0 seconds till 4 minutes. It is to the producer's right. Once उनका है तो उनके क्या टर्म्स होंगे लेबल के साथ, इज बिटवीन अ प्रोड्यूसर एंड अ लेबल. बट एज अ फिल्म कंपोजर यू हैव टू गिव योर राइट्स कंप्लीटली टू अ फिल्म प्रोड्यूसर. बट इंडिपेंडेंट की बात आती है तो क्यों ये कोई, इसमें ना हमें एक सुपरस्टार की वीडियो का बेनिफिट है, या मेनी फैक्टर्स कम इन. यू फील यू वांट टू डू इट, आई डोंट वांट समवन एल्स टू डू इट. और अगर मैं समवन एल्स को भी दूं, पर मेरा गाना है ना, जन्मा तो मुझसे है, किसी के ब्रीफ से नहीं.
तो वो आपको एक प्रोटेक्शन रहती है कि इंडिपेंडेंट है, ये मैंने किया है, मुझे एक डायरेक्टर की ब्रीफ पे मैंने ये इमोशन नहीं ढूंढा. सो द कंपोजर गेट्स, एंड इट्स इंपॉर्टेंट टू गेट अ लिटिल पर्सनल, कि ये अगर किसी फिल्म से रिलेटेड नहीं, तो मैं इसमें एक शेयर चाहता हूँ जो मेरे हक का है, मुझे प्लीज आप दीजिए. That's the only fight. I think everyone is standing. But it's working. It's working now. It's coming. It's coming. Today, I think all the labels also know, the top 4-5 that have been ruling for the last 20-30 years, that today a song can come from anywhere and be a hit. It doesn't have to rest on these 5 labels. It can rest anywhere and be reaching out. So that's now it's I would say in the most perfect way to end this would be, we may have lost the battle with them through these years, but the war has not been lost. We're still fighting it. So we'll That's interesting. That's interesting. So congratulations once again, and all the best wishes for this song and many more. Thank you very much. Thanks a lot. Share it, love it, and send it to everybody. Love you guys.